Dear friends, after discussion of deficient pattern of the spleen, then the excessive pattern of the spleen. So now let's discuss mixed pattern. So there are three main mixed pattern of the spleen. हमारे स्प्लीन के तीन मिक्स्ड पैटर्न होते हैं. So look at here. Deficient pattern of the spleen means spleen chi deficiency, spleen yang deficiency, spleen not controlling the blood, spleen chi sinking. ये चार deficient pattern है. The excessive pattern of the spleen, damp cold attack on the spleen, damp heat attack on the spleen. Now we are going to discuss mixed pattern. In the mixed pattern, we can see spleen chi deficiency is always there in all the three patterns. Mixed pattern में तीनों में spleen chi की कमी है. In the first pattern, there is a lung chi deficiency also. So pattern become lung and the spleen chi deficiency. Second, spleen chi deficiency and the liver blood deficiency. Third, liver is attacking on the spleen. ये तीन पैटर्न की बात कर लेते हैं पहले, फिर हम क्विज करेंगे. So today let's discuss the mixed pattern. The first one is spleen chi and lung chi deficiency. Second, spleen chi and liver blood deficiency. Third, liver invading spleen. Or we can tell liver chi stagnation plus spleen chi deficiency. तो ये तीन पैटर्न की बात करना है. तो पहले हम पहले की बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. स्प्लीन एंड लंग की डेफिशिएंसी. लंग और स्प्लीन की ची की कमी. ये पैटर्न को समझना काफी आसान है. Why? We know spleen produced food chi, lung produced air chi. स्प्लीन ने फूड ची का निर्माण किया, लंग ने एयर ची का निर्माण किया. देन बोथ आर कंबाइनिंग फूड ची एंड एयर ची आर कंबाइनिंग टुगेदर and becoming gathering chi. So this incidence is happening in the chest cavity that we know. हमारी छाती में the combination of the lung chi and spleen chi together becoming gathering chi, which is doing protection to the chest cavity, also responsible for speech. And after some time, this chi become true chi,
when they combine with the kidney. But right now we're not talking about that. Right now we are just till the gathering chi. बाद में जब किडनी chi इन्वॉल्व होगी तो यही ट्रू chi बन जाएगी. The true chi will circulate in all the meridian. So spleen is the source of food chi. Okay. स्प्लीन हमारा फूड ची का सोर्स है. नाउ समटाइम व्हाट हैपन, पर्सन इज टेकिंग पुअर डाइट, मे बी प्रोटीन डेफिशिएंट और रॉ सैलेड, टू मच कोल्ड फूड और सम फूड विच इज नॉट गुड फॉर स्प्लीन. कोई व्यक्ति ऐसा खाना खाता है, देन स्प्लीन ची बिकम डेफिशिएंट. देन लेस फूड ची प्रोडक्शन, स्प्लीन ची कमजोर हो जाएगी और फूड ची का प्रोडक्शन कम होगा. ओके, देन व्हाट विल हैपन, लंग विल रिसीव इनसफिशिएंट फूड ची. लंग को जो प्राप्त होगी फूड ची वो कम मात्रा में प्राप्त होगी, अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी. So lungs are receiving insufficient food chi. With the time, lung also get impaired. Now patient is showing the sign of spleen and lung chi deficiency together. दोनों. So spleen is doing the production and lung is container. स्प्लीन प्रोडक्शन करता है ऊर्जा का और लंग उसका कंटेनर है. So we have seen in this first spleen chi got deficient, कि spleen chi deficient हो गई, and finally spleen lung both chi got deficient. So here in this first what we discussed, we started our journey with a spleen chi deficiency. Let's suppose second one, someone is having lung chi deficiency. अगर हम second एक thought लें दिमाग में, then what is the second thought? Lung are weak, लंग कमजोर है. लंग chi deficient, लंग chi deficient है. Some kids since the birth they are suffering with the frequent cough and cold. In the every seasonal change they are suffering with the cough and cold, and they are having lung chi deficiency. अगर कोई व्यक्ति को लंग ची की डेफिशिएंसी है, so even the lung receive energy from the spleen, even lung receive food chi from spleen, but still they are not able to make a good amount of gathering chi. कि लंग ची तो कमजोरी है ना, lung are receiving, even the lung receive food chi from spleen, but still lung not able to make a powerful gathering chi and true chi. कि लंग बीच में कमजोर हो गया, तब वही बात होगी. जब आपको कोई चीज बनाना है तो दोनों चीजें ठीक होना चाहिए. Without, because when we are making gathering chi, true chi, we need both.
Even the one is deficient, then other will get affected. So in this will also spleen lung relationship get affected. So here, whether the spleen cheek is deficient, then the person is getting spleen lung chi deficiency finally, or the lung chi deficient, then also person is getting these things finally. तो ये चीजें हो सकते हैं. Patient will come with some symptoms. What are the symptoms with the patients? Patient is showing sign of the lung chi deficiency. Patient is also showing the sign of spleen chi deficiency, the combination sign. Patient will tell you, I don't have no appetite. भूख नहीं लगती, लूज स्टूल, and tiredness, कि भूख नहीं लगती, थकान लगती है, लूज स्टूल होता है. And person look weak and depressed. तो जो भी स्प्लीन चीक डेफिशिएंसी के पेशेंट होते हैं वो थोड़े डिप्रेस टाइप के लगते हैं. थोड़े these people looking like little depressed, no enthusiastic. On the other side, the person is having the sign of the lung. What are the sign of the lung? Chi deficiency, big voice, आवाज में जान नहीं होगी. The lung chi is deficient. Even breathlessness, maybe it is very little, but breathlessness and sweating, that is called spontaneous sweating. Because lungs are responsible for controlling the sweat. Even many other also responsible. लंग क्या करते हैं, हमारी स्किन के नीचे एक लेयरिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं. लंग आर क्रिएटिंग वन लेयरिंग सिस्टम बिलो द स्किन. लंग आर doing spray of water all around the just below the skin. If the person is having lung deficiency, having spontaneous sweating, I have seen, अगर एक 18 साल का बच्चा आपके पास आता है, उसको लंग डेफिशिएंसी है, even 18 years old or the 15 years old or the 16 years old person is coming with the lung deficiency, what are the sign? Doctor, every seasonal changes bring cough and cold to me. Too much sweating, even I don't do too much exertion in my class, I sweat, I get high sweat than the others. Higher means मेरी sweating तुलनात्मक रूप से ज्यादा होती है. This person sweat more than the others. This person is having frequent cough and cold with the seasonal changes. Breathlessness might present and might not present. It depends. 15-16 साल के बच्चे आते हैं, 22 साल 21 साल तक तो टकली हो जाती है साफ. ये यहाँ के बाल निकल जाते हैं, यहाँ के बाल निकल जाते हैं, झड़ जाते हैं. 25-26 साल के तो बहुत कम से कम 20 से 30% या 50% मैदान साफ हो जाता है. So what I am telling you, I've seen too many patients having lung deficiency, lots of sweating. Because person sweat a lot, he lose the essence. Person sweat a lot, because of dehydration, he lose lots of essence. And with the time, suffer with the hair loss. I have told many persons, after 3 years, you will be getting great amount of the hair loss. Why I tell them?
If you want to prevent, then take the step right now. अगर आप चाहते हो कि आपको बाल ना झड़े, what can I do, sir? Take Do the Nashya Karma. Nashya Karma means massage your around the nostrils with some oil. Take 2 minute steam. Put some drops in the nostrils like any oil, sesame oil, mustard oil, or some Ayurveda oil like Anu tel. Okay, do Nashya Karma. This is called Nashya Karma. This is called Pratimarsha Nashya. Pratimarsha Nashya, as per Ayurveda, we can do anytime. Actually, there are two types of Nashya. One can be done under the observation, supervision. That is a different type of Nashya. One is Pratimarsha Nashya. Anyone can do anytime. There is no any contraindication, limitation, nothing like that. 2 drops nostril in this nostril, 2 drops in this nostril. You can put coconut oil, you can put mustard oil, you can put sesame oil, you can put anu tel. Anu tel you can buy from market. So what will happen? It slowly it will discharge the curve. It will not allow deposition of the curve in this frontal sinus, ethmoid sinus in this area. Person will also get improvement in the lung chi deficiency and at least will not get hair loss. Otherwise, 100% this person is going to get the hair loss. Till the 25, जब उसकी शादी होगी ना, तो शादी में वो टकला आएगा 100%, है ना. शादी की एल्बम देख लेना उसकी. So in this way, the person is coming to you, the sign of the lung chi deficiency, or yeah, cow ghee also good. You can put cow ghee in the nostrils. 2 drops here, 2 drops here. So person is having weak voice, आवाज नहीं आती है तेज, breathlessness might present, and spontaneous sweating. Actually, sweating might be because of many organs. गाय का घी सबसे बेस्ट होता है. ऐसे तो बहुत सारे ऑयल डाल सकते हो, लेकिन फिर आपको उसकी ऑयल की करेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति की प्रकृति पता होना चाहिए. So as per the characteristic of the oil, as per the prakriti of the persons, you can choose the oil. If you don't know, then go with the anu tel, which is available in the Ayurveda shop, or cow ghee, which is easily available. So lots of organ are controlling sweat, even definitely heart is also. So when we talk about the sweat, if the person is having spontaneous sweating with a frequent cough and cold, then this is the sign of lung chi deficiency. So here the person is showing double sign. Person is showing the symptom of the spleen chi deficiency, no appetite, loose stool, tiredness, and looks depressed. On the other side, person is having weak chi, breathlessness, and sweating. Okay. So if we see the symptom of digestive problems and some symptom of the respiratory problem together, then we're telling it lung, spleen, chi deficiency. Okay. तो अब हम इसे ये कहते हैं. So we have to tell the patient. पेशेंट आते हैं, कहते हैं नाड़ी देखो. So once you check the pulse,
तो पहले तो आपने पल्स चेक की. वंस यू चेक द पल्स, टुडे got I checked the pulse of one person. I asked, do you have fatty liver? Yes, I have. Then he asked me why I have fatty liver. Now this question will become very disturbed. Now I have to explain why he has fatty liver. Maybe your food, no, my food is okay. Maybe your lifestyle, my lifestyle is wonderful. Maybe your thought process. I am very cool and calm. I don't know why you have fatty liver. I know you are having fatty liver, but I don't know why you have fatty liver. There might be 100 cause. So अभी आए भैया तेरे को फैटी लिवर है, अब मुझे बताओ क्यों है. हम क्या है ना, बताओ इसको, बताओ बैठ बैठ के तू क्यों है तेरे को फैटी. One patient came. Fatty liver is very common nowadays. One patient came. Okay, do you get angry very fast? Patient आके बोलते हैं नाड़ी चेक करो डॉक्टर साहब, नाड़ी चेक करो. I will not tell anything, you have to tell me something. ठीक है, बताओ ये नाड़ी. You get angry very fast. डॉक्टर, एंगर किसको नहीं आता. एंगर किसको नहीं आता. 2032 तक का समय ऐसा चल रहा है कि एंगर सबको आता है. Till the 2032, everyone will get anger. I don't know. Then I ask, what is till the 2000? I don't know that. What is till the 2032? Maybe some prediction someone has done. Everyone will get anger. Okay. I ask, everyone will get anger. That is true, but you get or not? Yes, I get. Too much anger. Okay. One patient got, you are having fatty liver. Everyone is having fatty liver nowadays. So patient is like that. है ना. पेशेंट ऐसे पल्स देखते हैं, डॉक्टर साहब पल्स चेक करके बताओ बीपी कितना है. बीपी ऐसे बताना पड़ता है, बीपी बताओ. शुगर कितनी है. So there are lots of patient is. Okay. So what I want to tell you, if the person is coming and person is working on the computer for 10 to 12 hours daily, 10 से 12 घंटे कंप्यूटर पे काम करता है कोई व्यक्ति. करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं. 10 to 12 hours is too much nowadays. It is very common. Am I right or not? Many person are doing 10 to 12 hours work on the computer. They don't do exercise. They don't eat properly. They eat irregularly. Okay. So now it has become very common. Now person are getting lung deficiency. Lung deficiency we are getting because suppose I am sitting like that. मैं ऐसे बैठा. So you can see my thoracic cage. My thoracic cage is constructed. ऐसे तो बैठा नहीं हुआ. Now my thoracic cage is expanded. So when I am sitting a longer time like this, lung get narrow space and lung get deficient. So when the person is working a lot, so then also getting lung deficiency, it because of the lifestyle today. So what we have to do? So we will make the treatment planning and we'll do lung and spleen G deficiency. We'll work on the lung and spleen G deficiency. Okay. So we'll choose some point of the spleen and some point of the lung. हम कुछ spleen के point choose कर लेंगे और कुछ lung के point choose कर लेंगे. For the spleen, we will choose stomach 36, spleen 3, spleen 6, urinary bladder 20, urinary bladder 21, tonification.
For the lung, we can choose the source point of the lung, the backside point of the lung, and very important point, governing vessel 12. I will tell you why this point is very important. So we look at the urinary bladder meridian. ये हमारा urinary bladder meridian है. So we can see there are multiple backside point here. There is a urinary bladder 11, urinary bladder 12, urinary bladder 13, urinary bladder 14, urinary bladder 15 here. So the 13 is the backside point of lung, 14 is the backside point of pericardium, 15 is the backside point of heart. इस तरह से सारे backside point है. So that's why we are taking this urinary bladder 13, which is the backside point of the lung. So one urinary bladder 13 this side, one urinary bladder 13 this side. In between we are having one point that is governing vessel 12. इनके बीच में होता है ये वाला governing vessel 12. So all the 3 points on the same line, and they are working for lungs. So this become very good protocol. ये हमारा एक प्रोटोकॉल का निर्माण हो गया है. With the help of this, we can work on the spleen, lung and spleen chi deficiency. Now let's move to the mixed pattern number 2. There is a lung chi deficiency plus liver blood deficiency. Sorry, it is spleen. Spleen chi deficiency plus, so in the 5-element cycle, we know this is the spleen. Spleen chi is deficient. And this is the liver. Liver blood is also deficient. So this is a combined pattern of these two. ये इन दोनों का combined pattern है. Yes. So now if we talk about the spleen, let's try to understand. Person is taking lots of cold food, raw food, or anything which is making spleen weaker. Spleen become deficient. Spleen deficient हो जाती है. Production of food chi reduces. जो फूड ची का प्रोडक्शन कम हो जाता है. Then because food chi is less, so the formation of blood is also less. Because blood is also made by spleen. When the spleen is sending food chi, the food chi is converting in the blood. So formation of the blood is also less. Okay, now because liver is waiting for blood, liver is waiting for blood, but liver is not receiving enough blood. लिवर को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं बनता, so liver blood also get deficient. In this way, this pattern becoming spleen chi deficiency plus liver blood deficiency. That's why this is combined pattern we will see in some patients. हम कुछ patients में ऐसा देख सकते हैं. We find these same things.
in many patients. So here we will find the symptom of spleen chi deficiency, also the symptom of liver blood deficiency. So we'll find no appetite, tiredness, loose stool, and this patient looks depressed. तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के भूख नहीं लगेगी, थकान लगेगी, लूज स्टूल होगा और पेशेंट थोड़ा सा डिप्रेस टाइप का लगेगा. On the other side, the person also showing the sign of liver blood deficiency. Liver blood is reaching to the eyes, reaching to the brain, reaching to the arm. Okay, so liver blood going to brain, going to eye, going to limbs. So what will happen? When the liver blood is deficient, person get dizziness, blurred vision because not reaching sufficient in the eyes. When it is not reaching properly in the limbs, there is a tingling or numbness in the limb. Tingling or numbness in limbs. हाथों में, पैरों में, लिम्स में numbness हो सकती है, tingling हो सकता है. I have seen this pattern very commonly in many diabetic patients. The diabetic patient, if they are taking the medicine for the diabetes since long time, so they are having no appetite, tired, loose stool, and when they are suffering with the diabetes, taking the medicines for 10 years, 15 years, 20 years, we can see they are suffering with the liver blood deficiency also. They are having tingling in the limbs, numbness in the limbs. Sometimes they are not able to hold some object, hand is not supporting enough. This pattern is very common. One lady was suffering with the diabetes. She always has a dizziness. She is taking one medicine, and medicine itself is written that this medicine causes dizziness. वो जो डायबिटीज की दवा खाती है, उस डायबिटीज की दवा के साइड इफेक्ट में ही लिखा हुआ है कि इस मेडिसिन के सेवन से डिजीनेस होगी, सिर घूमेगा. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई प्रकार की जो मेडिसिन का सेवन करने के बाद डिजीनेस आती है. This pattern is very common with many diabetic patients, spleen deficiency with liver blood deficiency, but not only diabetic patient. If you see anyone is telling you our limbs become weak or suffering with vision issue, brain problem, so liver blood is not reaching to the brain, to the eyes, to the limbs. So when the liver blood is not reaching in the brain, person is getting dizziness. Liver blood is not reaching to the eyes, person is getting blood vision. अब अलग अलग पेशेंट अलग अलग लक्षण लेके आएंगे. One patient is coming to you, doctor, I am having poor appetite, tiredness, loose stool, only showing the sign of spleen, then spleen deficiency. Another patient showing plus I have dizziness and blood vision, then we'll combine liver blood deficiency. तो हम लिवर ब्लड डेफिशिएंसी को भी कंबाइन करेंगे. Got it? तो इस तरह से हमने देखा कि एक्सेसिव
raw food, cold food, insufficient food in the protein create lots of problem. What is the treatment? इसका इलाज क्या है? टॉन स्प्लीन, टॉन लिवर, टॉन ब्लड, इंप्रूव ब्लड। हमें तीन चीजों पर काम करना पड़ेगा। We have to tonify many points. Then we'll able to work. So we'll work on the spleen. For the spleen, we can take spleen 3, spleen 6, stomach 36, urinary bladder 20, 21, tonification. For the liver, we will take liver 8, tonification. Liver 8 is a very good point to tonify the liver. And we can take the back soup under the liver, that is urinary bladder 18. ये हमारी लिवर का बैक्सो पॉइंट है। For the blood, we will take urinary bladder 17. Influential point of bladder. So in this way, we will make this protocol. इस प्रोटोकॉल के माध्यम से हम begin work on this. So we'll able to improve the spleen, able to improve the liver, able to improve the blood. तीनों को हम improve कर सकेंगे। So in this way, we have tonified the spleen, tonified the liver, and also we have worked on blood. हमने तीनों पे काम कर लिया। Another third pattern, let's talk about. Liver invading on spleen. But if we want to write in the detail, then we have to write in a different way. Here, there are three things. यहाँ पर तीन चीजें हो रही हैं. Number one, spleen chi is deficient. Number two, liver chi is stagnant, means excessive. And number three, dampness. Dampness because of spleen chi is deficient. So dampness creating obstruction. ये तीन चीजों का हमें समझना पड़ेगा. When three things get combined, this pattern comes. So even we can tell the three combination: spleen chi is weak, liver chi is stagnant or excessive, dampness creating obstruction. So how to understand this? Remember one thing. When the spleen chi is deficient, it will create dampness. When the liver chi is stagnation, it will create heat. स्प्लीन ची की डेफिशिएंसी से डैम्पनेस बनती है और लिवर ची के कारण, लिवर ची स्टैग्नेशन के कारण
हीट का निर्माण। So now we can see understand in a very easy way. Suppose if the spleen become deficient, we already know the reason: raw food, cold food, overthinking, and all. Food is not properly nourished, having not enough nourishment. If the spleen become deficient, so transformation of the food and the transportation of the food become deficient. अगर स्प्लीन कमजोर होती है तो फूड का ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन कमजोर हो जाएगा. So there is a fluid accumulation and dampness. क्रिएशन तो dampness बन जाएगी, क्योंकि जब फूड का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या बनेगा, उसी फूड से dampness बनेगी. ओके तो चलो, स्प्लीन ची की कमी से पहले हमारी dampness तैयार हो गई. So in the first happened because of the big spleen, there is a formation of the dampness. Now dampness is blocking the middle warmer. Dampness block middle warmer. एक्चुअली ये जो पैटर्न है, ये यही पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे हैं कि डैम्पनेस ने अब मिडिल वार्मर को ब्लॉक कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया. सो डैम्पनेस ब्लॉक द मिडिल वार्मर, डैम्पनेस ऑब्स्ट्रक्ट द मिडिल वार्मर. नाउ spleen chi not going upward, stomach chi not going downward, liver chi also not flowing freely. लिवर ची को तो कोई रोके तो लिवर ची नाराज हो जाती है. Okay, liver chi also not flowing properly because of the block is blocked middle warmer. Spleen is not flowing, stomach is not flowing, stomach chi is not flowing, liver chi is not flowing. Now when this remain for longer time, maybe person बार बार खाना खाता ही रहता है, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक. कई लोगों को कमजोरी है, many persons are having habit, even they are having lots of problem, they are having cholesterol, they are having fatty liver, they are having overweight, they are having lots of problem, even they are having cough and cold, still they keep eating ice creams, cold drink, cold water, and drinking lots of water after the meal. That also not good. Raw salad, raw food, damp food खाते रहते हैं. So when this dampness is blocking the middle warmer for longer time, either stomach chi is not flowing, spleen chi is not flowing, liver chi is not flowing, then it create heat. क्योंकि dampness is there and heat is also, because liver chi will create heat. तो अगर स्प्लीन ची कमजोर हुई है, उसे समय पे ठीक कर लो. अदरवाइज इफ so chronic condition, in chronic condition heat also get generated.
So dampness is already there. Now heat come in the picture. बस हो गया काम गड़बड़. Damp heat. Now damp heat in the middle warmer. Now this is becoming jaundice. ये पीलिया बन जाता है, jaundice बन जाता है. Either it becomes jaundice or any problem, infection, inflammation of gallbladder, even liver. This person will be so having, we can divide this as chest cavity. This is the upper abdomen, the lower abdomen. So this is the upper warmer, the middle warmer, the lower warmer. Upper warmer till the chest. Then stomach, spleen, these all coming in the middle one. Stomach, spleen, liver, gallbladder. So person is feeling fullness in this area, fullness. Very tight this area. इसे बोल सकते हैं epigastrium और this upper abdomen. और वही लक्षण फिर सारे हैं. The combination symptom. The combination symptom. The symptom will be of spleen dysfunction. The symptom will be of dampness. Now symptom will be of the liver chi. So for the spleen dysfunction, poor appetite, loose stool, tiredness, and person look depressed. भूख नहीं लगेगी, टायर्डनेस लगेगी, लूज स्टूल होगा, व्यक्ति डिप्रेस लगेगा. डैम्पनेस के साइन, हैवीनेस एंड नॉशिया. Even we can see feeling of heaviness in the epigastrium. Okay, heaviness, nausea, and if you see the tongue having thick coating. Sign of dampness. The person is having heaviness and nausea. Liver chi sign. Person is getting jaundice. Bitter taste in the mouth. Pain in hypochondrium. हाइपोकॉन्ड्रियम का अर्थ होता है if we divide the abdomen in 9 parts, so this is called hypochondrium, where we have liver. Hypochondrium, the right hypochondrium and the left hypochondrium. So the person is having a sign of the liver, pain in the hypochondrium. Okay. और heaviness in the hypochondrium. तो तीनों के लक्षण होंगे. So even when the person is coming with a complaint of jaundice, you have to work on the spleen deficiency, on the dampness, on the liver, like that. So in this way, लोगों को हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन क्यों होता है जब लिवर ची स्टैग्नेशन होता है तो
Because liver chi is not flowing properly. So it's stuck and create pain in the hypochondria. So jaundice means damp heat in the middle warmer. मे बी किसी को जॉइंटिस नहीं है, सिर्फ गॉल ब्लैडर की दीवार में इन्फ्लेमेशन है, ओनली इन्फ्लेमेशन इन द वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर, और इफ यू टच दैट एरिया इज वेरी पेनफुल. तो हमने 3 पैटर्न समझे. ये जो पैटर्न हमने तीसरे पैटर्न की बात की है, इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या बनेगा? We have to work on the spleen. We have to work and clear the dampness. We have to work on the liver. Right? हमें इन 3 चीजों पर काम करना होगा. So we'll tonify CV12 and bladder 20 to improve spleen. हम 2 पॉइंट को टोनिफाई करेंगे. कभी कभी हम सिर्फ सिंगल पॉइंट ही टोनिफाई करते हैं, CV12. That is why we tonify. So if we improve the spleen, so there is a no formation of the flame, dampness. हम स्प्लीन को इंप्रूव करते हैं ताकि वापस फ्लेम का निर्माण ना हो. Or we can take 2 points, backsupport of the spleen and the CV12. We tonify it. In the next step, we have to sedate many point to release the dampness. We have to sedate many point for liver. हमें इसके लिए कई पॉइंट लगाने होंगे. लिवर ची के लिए भी. So for releasing the dampness, we can take spleen 3, spleen 6, spleen 9 sedation. हम इन 3 पॉइंट का प्रयोग कर सकते हैं, spleen 3, spleen 6, spleen 9 sedation. And for the liver, not only for liver and gallbladder, we can take liver 13, which is we can take liver 14, we can take gallbladder 24. So liver 14 is the alarm point of liver. Gallbladder 24 is the alarm point of gallbladder. And we are taking liver 13. Liver 13 also very good point to calm down the liver. And we can take gallbladder 34. Gallbladder 34 is a very special point to release the pain from the hypochondria. हमारे hypochondria में से पेन निकालने के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है. sedate. इतने पॉइंट लगाएंगे. So what we have done, we have strengthened the spleen, we have released the dampness, and we have sedated the many liver point, because liver chi got stuck in the dampness, so not able to free flow. लिवर जी अटकी पड़ी है कहां पर? डैम्पनेस, तो फ्लो नहीं कर पा रही है. With the help of these points, we can make the liver chi, bring the liver chi in the flow. That otherwise person will be having lots of pain on the rib cage. व्यक्ति का रिब केज में पेन हो सकता है. तो यही प्रोटोकॉल का प्रयोग हम करेंगे. अगर किसी को पसलियों में दर्द है जहां पर लिवर होता है, द पर्सन इज हैविंग पेन ऑन द रिब्स वेयर द लिवर इज लोकेटेड. Any problem with the liver, like we can tell inflammation of the liver, inflammation of the gallbladder, there is a gallstone or the jaundice, or there is inflammation of the wall of the gallbladder,
अगर गॉल ब्लैडर की दीवार का कोई इन्फ्लेमेशन है, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स वी कैन वर्क ऑन दैट। तो भी हमने स्प्लीन को टोनिफाई कर दिया और हमने डैम्पनेस और लिवर की ऊर्जा को निकाल दिया। सो नाउ वी विल बी डूइंग क्विज। हाँ, हम कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। बी डेफिनेटली कैन ऐड लिवर 3, यस राइट। बी डेफिनेटली कैन ऐड स्प्लीन 10, yes right. No need to do moxibustion on the liver 8. Liver 8 is the water point and it is improving the blood. तो liver 8 पर moxibustion की कोई जरूरत नहीं है। डैम्पनेस और फ्लेम में अंतर होता है। स्प्लीन 3, स्प्लीन 6, स्प्लीन 9 are the very good point for dampness. जब dampness is heavy and want to go down, like we can see white discharge, leukorrhea, or swelling. But when we talk about the flame is also bringing happiness, but flame is a little subtle, little either visible or invisible form. Flame is both in the both form. देखो डैम्पनेस तो फुल्ली विजिबल होती है, भारी होती है, हैवी होती है, लेकिन फ्लेम विजिबल इनविजिबल दोनों फॉर्म में होता है। फ्लेम आई विल गिव एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कि आफ्टर झगड़ा झगड़ा करने के बाद, आफ्टर क्वेरलिंग, आफ्टर फाइटिंग विद your partner, with a boyfriend, with a girlfriend, with a loving one, suddenly you start feeling heaviness in your chest. Or someone told you something and you felt bad. You got something stuck in your chest. आपको किसी ने कुछ बोला, आपको बहुत गंदा लगा। अब आप दौड़ के गए, आपने एमआरआई करवाया, देखूं क्या कुछ निकलेगा, एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन में कुछ निकलेगा? You will not find anything. That is called invisible flame. That is the flame which is invisible. So stomach 40 is the best point for flame. Even it is good for, it might be good for dampness also, but stomach 40 is the best point for flame. Sometimes we use for coughing also, person is coughing and spitting lots of cough. So we are using stomach 40, we are telling it stop sputum point also. इसको sputum को कम करने वाला point भी कहते हैं। पर अंतर समझिए कि दो चीजें होती है। आपको मालूम है कि जब इमोशन अटक जाते हैं कहीं पर, गले में इमोशन अटक गए, छाती में इमोशन अटक गए, वो इनविजिबल फ्लेम होता है एक तरह से। दैट इज वन टाइप ऑफ इनविजिबल फ्लेम। अब हम करेंगे क्विज। हम क्विज करेंगे सबकी, तीनों की। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 1, which is already the group. Kindly start doing. हम 3 क्विज करेंगे बैक टू बैक, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। So kindly unmute yourself and anyone can start reading. कौन पढ़ेगा?
आवाज नहीं आ रही A patient has pure appetite, fatigue, loose stools, and Hmm. weak limbs. Which pattern is most likely? That is Hmm. first one. A. Spleen Chi deficiency. So this is the first pattern, that is spleen Chi deficiency. Question number 2. Which symptoms best difference spleen yang deficiency from spleen Chi deficiency? Cold A. limbs. Cold limbs. Cold limbs. Question number 3. A patient has heavy menstrual bleeding, easy bursting, and fatigue. Which Bruising. pattern? Bruising. Bruising. Spleen not controlling blood. Controlling blood. So that is a spleen not controlling. Blood. Question number 4. Which of the following is the primary function affected in spleen Chi deficiency? Transformation and Transformation and transportation. transportation. The transformation, the transportation is affected. There's a primary function affected in the spleen. Chi deficiency. Question number 5. Which food habit commonly damages spleen Chi? Excess Excess cold food drinks. and drink. Excess cold food and drinks. Excessive cold food and drink. Question number 6. A patient has edema, watery diarrhea, and cold intolerance. Which pattern is Spleen most yang likely? deficiency. Because here the watery diarrhea. So watery diarrhea is the sign of spleen yang deficiency. Question number 7. Which acupuncture point is classically used to stop bleeding in spleen, not controlling blood? Spleen SP1. Spleen one. That is the spleen 1. That is the classical point to stop the bleeding. Question number 8. Teeth marks on the tongue are commonly associated with which pattern? Spleen Chi deficiency. That is the spleen Chi deficiency. Very good. Question number 9. Which treatment principle is correct for spleen yang deficiency? That is Warm yang Warm and the 25 yang and spleen. 25 the spleen chi. So if we want to improve the spleen yang, then what to do? What is the principle? Warm the yang and 25 25 spleen. Spleen. Question number 10. Long-standing spleen Chi deficiency may progress into all of the following. Spleen yang deficiency. इसमें दिया No, है liver fire blazing. except Liver fire blazing. Oh. Liver fire blazing. क्या नहीं D होगा? answer is D. If the person is having spleen Chi deficiency, definitely it becomes D, spleen D, yang D. deficiency. It might become spleen Chi sinking. It might become spleen not controlling the blood. Not But fire liver fire. blazing, it is a different thing. Okay, so this is the answer. Now quiz number 2, question number 1. और कोई पढ़िए. Which symptom is the hallmark of spleen Chi sinking? Organ prolapse. Organ prolapse happening in the spleen, Chi sinking. Question number 2. A patient has poor appetite, heavy body, no thirst, and white vaginal discharge. Which pattern is most likely? Cold damp. Bleeding spleen. So here patient has poor appetite, means spleen is involved, heavy body, dampness, no thirst, and when the dampness is there, person is having no thirst, and the vaginal discharge. So that is a sign of the cold damp. Cold damp invading spleen. Spleen. Invading spleen. Yeah. burning sensation during Defecation. Actually, here very important, no thirst. You remember thirst here. I will tell you one thing here. Huh. There are two patients, patient 1 and patient 2. One person is having thirst. Suppose patient A is having thirst and patient B is not having thirst. So thirst means heat and no thirst means cold condition. Right? So here now it is written one patient having heaviness, means they want to tell you one patient is having dampness. No thirst. What I want to convey that there is no heat. No heat. Okay.
But if there is a heat, then there will be thirst. One more thing I want to tell you here. So whether the person having thirst or no thirst, in both the condition, चाहे व्यक्ति को प्यास लगती है, गर्मी है तो, और चाहे नहीं लगती है, कोल्डनेस है तो, दोनों कंडीशन में व्यक्ति पानी नहीं पीना चाहता. इन बोथ कंडीशन person does not want to drink water, even thirsty. Why? Still, Dampness. Because of dampness. Dampness वो क्या है ना कि heat is there, so person is feeling thirsty, but because of dampness person doesn't want to drink. तो ये आता है ऐसे लिख के, okay, person is thirsty but doesn't want to drink the water. सर स्टमक इनडेफिशिएंसी में भी तो होता है ना ऐसा? हाँ, उसमें भी होता है. उसमें भी हो सकता है, यहाँ भी होगा. तो देखिए ये हमारा, तो था ए patient has poor appetite, heavy body, no thirst, and white vaginal discharge. White means cold condition. So which pattern? Cold, damp, invading spleen. Yes. Question number 3. सर मैं एक बात पूछूं? लास्ट में क्वेश्चन पूरे नहीं, होने इससे के. रिलेटेड ही है. हाँ बोलिए. कोल्ड डैम्प जो है उसमें फीमेल का सिम्टम है, मेल में मतलब क्या सिम्टम होगा? ऐसा किसने बोला कि कोल्ड डैम्प फीमेल का सिम्टम है? नहीं, मतलब फीमेल के लिए बताए कि डिस्चार्ज, हाँ वाइट हाँ, तो डिस्चार्ज, और बाकी मेल को बाकी होंगे. तो पूरा वो तो एपेटाइट यंग होगा. डेफिशिएंसी में भी सेम सिम्टम्स होते हैं. नो, स्प्लीन पर्सन विल बी यंग हैविंग. डेफिशिएंसी में भी वही सिम्टम्स होते हैं ना. जैसे दिस डिफरेंशिएट फ्रॉम कोल्ड डैम्पनेस टू, इट डिफरेंशिएट्स स्प्लीन यंग डेफिशिएंसी विद कोल्ड डैम्पनेस. आपको क्या बट बताया था, कैसे पहचानेंगे कि डैम्पनेस है? वही बताया था मैंने स्पेशली थर्स्ट का यस्टरडे. बताया था ना. किसका? थर्स्ट, अभी आपने थर्स्ट पे अभी नहीं, बोला ना. कल मैंने स्पेशली एक उसमें चीज बताई थी. हाँ, मैंने एक चीज बताई थी स्पेशली. आई टोल्ड वन थिंग, हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर आपने डैम्पनेस टंग इज का कन्फर्म. बताया था कि टंग है, टंग वाइट हाँ, खाली टंग. बस यही सिम्टम्स रहेगा मेल में, नो, इसके और भी अलावा रहेगा. कोई? अभी मेल, जब मेल आपको बोलेगा तब पता चलेगा ना. मेल बोल सकता है कि मुझे ये सिम्टम होते हैं और मुझे लूज स्टूल होता है. लूज स्टूल होता है. अब मान लो किसी को वाटरी डायरिया होता है, वो अलग चीज है. वाटरी डायरिया इज द साइन ऑफ व्हाट? स्प्लीन young deficiency. Spleen C है deficiency. ना, स्प्लीन सी watery diarrhea is डेफिशिएंसी. the sign of spleen deficiency person is having. So if the person is having the symptom of cold condition, तो इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है. लाइक इट इज नॉट लाइक सो कोल्ड डैम्प. एक्चुअली देखो, मैं वेट कल वेट 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 वेट. कोल्ड डैम्प attacking on the spleen can create many symptoms in the female, even many symptoms in the male. So what are the symptoms? तो इनमें कई लक्षण पैदा हो सकते हैं. वेट, पहले तो इंतजार तो कर लो, सुन तो लो पहले पूरी बात, फिर आप आ जाओ ना उसमें. फर्स्ट वी आर टेलिंग इफ द कोल्ड डैम्प अटैकिंग. हमने कुछ लक्षण बोले, पेशेंट थोड़ी आपको 100 लक्षण बोलेगा. वी आर टेलिंग फॉर द फीमेल, फीमेल इज हैविंग वाइट वेजिनल डिस्चार्ज, हैवीनेस इन द पेल्विक एरिया. ओके, ये हमने बोला. इफ वी टॉक अबाउट द मेल, ही विल टेल हैवीनेस इन द स्क्रोटल एरिया. एंड इफ द पर्सन माइट बी हैविंग, वो वहां पर उसे एक खुजली होगी इन द नियर द जेनिटल पार्ट. इट माइट बी इची, वाइट थिंग्स, वाइट स्केली थिंग्स कमिंग. डैम्पनेस, गीलापन होगा उसको, है ना, वहां पर होगा. बिकॉज when the dampness is there, the fungal infection might be there. Okay. तो यूरिनरी सिस्टम के कई लक्षण हो सकते हैं. देयर माइट बी क्लाउडी यूरिन in the male also. If the cold condition, too much urine. If the heat condition, yellow urine. अगर कोल्ड होता है ना, तो यूरिन बहुत होता है, ज्यादा होता है, और क्लाउडी होता है. तो कोल्ड के कारण ज्यादा और डैम्पनेस के कारण क्लाउडी होता है. So there might be many symptoms.
एंड पेशेंट विल टेल यू, विल आस्क ओके और क्या लक्षण होते हैं, और जीभ देख लोगे साथ में, तो यू विल बी हैविंग कंफर्म। अगर वाटरी डायरिया होता है, एकदम पतले दस्ते जैसे होते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कंडीशन स्प्लीन यांग की है। So how to differentiate spleen yang deficiency and other pattern from the cold damp condition? Cold damp condition is the excessive condition. एक तरफ तो हमारी cold damp condition excessive condition है, और हमारी दूसरी ओर spleen yang deficiency हमारी deficient condition है। ओके, बोलिए जी, आगे बोलिए। नहीं, बस वो डिफरेंशिएशन ही था, यांग डेफिशिएंसी, बिकॉज यांग आल्सो ब्रिंग हैवीनेस, कोल्ड डैम्प आल्सो ब्रिंग हैवीनेस, और स्वेलिंग उसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो सब सिकाई सिकाई, पैटर्न। हाँ, तो उसमें दोनों में अंतर होगा। उसमें स्टिकी कोटी, मतलब दोनों में अंतर है, डैम्पनेस ज्यादा होगी। ओनली टंग स्टिकी, कोटिंग है। टंग कोटिंग के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। डैम्पनेस स्टूल में आएगी तो स्टूल चिपकेगा। पूछोगे पानी डालते हो तो पानी स्टूल बह जाता है क्या? क्या नहीं बहता, चिपकता है। डैम्पनेस विल बी कमिंग इन द स्टूल, सो देयर विल बी स्टिकी स्टूल, स्टिकी फीलिंग, है ना, फीलिंग स्टिकी, दैट इज द डैम्पनेस। और यांग डेफिशिएंसी में ऐसा वाटरी डायरिया होगा, वो क्या चिपकेगा, ऐसे ही बह जाएगा, है ना। यांग डेफिशिएंसी, तो इसमें क्या होगा कि जैसे आप, तो बहुत सारी चीजों अगर के लक्षण, मतलब यांग डेफिशिएंसी वाला जो होगा ना, उसको बहुत ज्यादा फुलनेस फील होगी, छाती में, पेट में बहुत फुलनेस फील होगी उसको। तो ध्यान रखिएगा, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी का मतलब आप समझ सकते हैं कि नो फायर इन द बॉडी। फॉर द स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, नो फायर इन द बॉडी। व्हाट इज कोल्ड डैम्प? कोल्ड डैम्प का मतलब है कि किसी को, है ना, आइस के बॉक्स में डाल दिया, किसी व्यक्ति को एक बर्फ के बॉक्स में डाल दिया है। सो ही इज फीलिंग लॉट्स ऑफ एक कोल्डनेस है। स्प्लीन यांग में भी लिम्स कोल्ड फील होते हैं, फील होते जब हैं, हाँ। स्प्लीन, इसमें भी होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कोल्ड डैम्पनेस ज्यादा में ज्यादा कोल्डनेस फील होता है। हाँ, मतलब बहुत सारे लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी पेशेंट पैटर्न उसमें, और ये एक्सेसिव पैटर्न है। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे हमने बताया है कि स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी की जो सूजन है, जो पानी है, जो डायरिया, वो उसमें वो सब पतला है। पतला है मतलब, अगर द पर्सन इज हैविंग स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी एंड यू आर डूइंग सम ऑक्सीवेशन, you are doing some treatment, you will see immediately water will come in the circulation and person is getting good effect in the swelling and even watery diarrhea। जो डैम्प हीट का जो स्वेलिंग भी होता है ना, वो ठोस होता है, थोड़ा ठोस टाइप का। जैसे उदाहरण के लिए कि एक जैसे कि एक तकिया है, तकिए में पानी भर दो, दैट इज स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी। और उस तकिए के अंदर आप वो भर दो, थोड़ा सा शहद भर दो, शहद गाढ़ा, है ना, वो डैम्पनेस हो गया। या शहद की तुलना में शहद भी हटाओ, मक्खन भर दो, मक्खन। सो लाइक टेक वन पिलो, इनसाइड द पिलो यू फिल in the inside the balloon, take the example balloon, inside the balloon you fill the water, that type of spleen yang deficiency swelling। but inside the balloon you fill some makhan, butter, It that will type be of sticky. so that type of it will little harder, spleen yang will be very softer, watery, okay, swelling Got that way। it. Thank question you. number question number next, yeah, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ गए हमारे स्पीकर?
अरे पढ़िए, इतने सारे लोगों में से एक दो तो पढ़िए। Burning sensation during defecation with हाँ foul smelling, loose stool suggests damp heat invading spleen. The invading spleen. yeah. So damp heat invading spleen means burning sensation during defecation. Yeah. So this is the right answer. Question number 4. Which symptom is commonly seen before organ prolapse develops? A. Answer: Bearing bearing down sensation. Bearing down down sensation. sensation. Question number 5. Which taste is commonly associated with the damp heat invading the spleen? Hmm. Answer is bitter taste. Sweet. Sour taste. Damp Damp heat. heat is there. Sweet. Sour Sweet. taste. जब स्प्लीन हैम्पर्ड होगी तो कैसा टेस्ट आएगा, बताइए। Sour because liver is Because attacking of it. the heat, it is bitter taste. Bitter taste. So damp heat attacking on the spleen will be creating damp heat जब आक्रमण करेगी तो स्वाद कड़वा होगा कि मीठा होगा? Bitter taste. ध्यान रखिएगा कि डैम्प हीट विल क्रिएट बिटर टेस्ट, ये बिटर टेस्ट ही पैदा करेगी, हीट मीठा टेस्ट नहीं पैदा कर पाएगी। Which test is commonly associated with a cold damp invading the spleen? Sweetest or no taste. Sweetest. Question number 6. Or no taste. Which test commonly associated with a cold damp, so sweetest or no taste? No taste. ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं दो। When the damp heat attacking on the spleen, bitter, cold damp, sweetest or no taste? Question number 7. Which acupuncture point is most important for raising sinking chi? DU20. DU20. DU20 is very important point to raising the sinking chi upward. Question number 8. Which symptom indicates dampness rather than heat? Heavy body. Heavy body. Heavy body. Heavy body. Heavy body. Question number 9. Which treatment principle is correct for damp heat invading the spleen? Hmm. Resolve dampness, clear heat. Clear heat. Resolve dampness, clear the heat. Question number 10. Which condition is commonly associated with the spleen chi sinking? A. Prolapse. Prolapse. Rectal prolapse. Question number 3. Question number 1. May I read, sir? Patient has poor appetite, loose stools, weak voice, and Spleen slight and lung chi deficiency. pattern is most likely. Spleen and lung chi deficiency. Spleen and lung So spleen and lung chi deficiency Spleen because of and lung chi the deficiency. spleen, person is having poor appetite, loose stool, and because of the lung, person in weak voice and slight breathlessness. Spleen, lung chi deficiency. Question number 2. Which organ pair is responsible for producing chi according to this Spleen combined and pattern? lung. Spleen and lung. Spleen and lung. तो ची का निर्माण स्प्लीन लंग दोनों के Spleen and योगदान lung. से होता है। स्प्लीन इज मेकिंग फूड ची, लंग इज मेकिंग एयर ची, then both together making gathering chi. Gathering chi. And after the gathering chi, there is a formation of the two Dham chi. chi. So these two are very much important, responsible for producing the chi. Question number 3. A patient has poor appetite, loose stools, dizziness, and blurred vision. Which pattern is Spleen most and likely? Spleen and liver blood deficiency. So the spleen and liver blood deficiency, now patient have poor appetite, loose stool, they are the sign of spleen deficiency. Dizziness and blurred vision are the sign blood of vision. liver blood deficiency. Liver. Blood Answer deficiency. will be A. Question number 4. Which symptom suggests liver blood deficiency rather than simple spleen chi deficiency? Blood vision. Blood vision.
So blurred vision is the sign of liver blood deficiency. Question number 5. A patient has hypochondriac pain, epigastric fullness, and bitter taste. Which pattern is most likely? A. Dampness with Obstruction of spleen by Obstruction of stagnation spleen by of liver dampness chi. with stagnation of liver chi. So because patient is having hypochondriac pain, epigastric fullness, and bitter taste. Bitter taste. So now Liver. obstruction of the spleen by dampness and stagnation of the liver chi. Liver chi Of will create liver heat, chi. and this will also might become jaundice. Question number 6. Which symptom is most characteristic of liver chi involvement? Hypochondriac pain. Hypochondriac pain. Hypochondriac pain. So hypochondriac pain is the most common sign of liver chi involvement. Question number 7. Which treatment principle is correct for spleen and lung chi deficiency? Tonify. Tonify lung Tonify chi, lung tonify chi spleen chi. and tonify spleen chi. Very good. Tonify lung chi and tonify spleen chi. Question number 8. Which treatment principle is correct for spleen and liver blood deficiency? A. Tonify spleen Spleen chi and liver blood. and liver blood. Tonify spleen chi and the liver blood. Question number 9. Which taste is commonly associated with obstruction of spleen by dampness with stagnation of liver chi? Bitter taste. Bitter. Bitter taste. Bitter taste. Dampness and stagnation of the liver chi will be creating heat. So now it becomes damp heat. Damp heat. Bitter The taste. taste of the damp heat will be bitter. Bitter. Question number 10. The patient presents with epigastric fullness, poor appetite, nausea, heaviness of the body, bitter taste, and hypochondriac pain. Which pattern is the most likely diagnosis? Obstruction of A. Obstruction of spleen by spleen by dampness dampness with with stagnation stagnation of of liver liver chi. chi. Obstruction of the spleen by dampness and the stagnation of the liver chi. Very good. Wonderful. So you have completed 30 quiz. We have completed spleen. Tomorrow we'll start stomach. Everything is clear? Okay. Sir, can Any I question? ask a question, sir? Yeah. Sir, is dandruff anyway connected to spleen chi deficiency? You're asking dandruff? What is dandruff as per TCM? Yes, sir. Yes, dandruff. What do you think as per TCM? What is the dandruff? आपको क्या लगता है? आपने कुछ सोचा होगा ना dandruff के बारे में? Yes, sir. Like Right. one thing is like water Dryness. element is Dryness हो deficient. सकता है. What do you think? Water element is deficient. In the dandruff? Yeah, so we can tell in the other word dryness. Dryness. Actually, so I will tell you, in the dandruff, there might be many causes. One cause is a dampness. Dampness also there, like spleen chi deficiency with a dampness. Okay, so like it is creating dampness. The spleen chi deficient होगी, dampness होगी. Dampness means dirtiness. It will create fungal infections and it will create dandruff over the skin. So if we want to work on the dandruff, we have to work on the spleen also, and we have to clear the dampness. Okay. Suppose if the person is having dandruff, but some yellow flecks. Dandruff है, but some yellow flecks. Now, not only dampness, not damp heat. So now we have to work on the damp heat, especially in the liver and gallbladder. So when there is a damp heat in the liver and gallbladder, it create क्या है? Only dampness. It will create dandruff. So just work on the damp, but now damp heat in the liver and gallbladder, it also will create dandruff. But now dandruff, this will intense itching, बहुत ज़्यादा itching होगी और redness भी होगी. तो दोनों अंतर हो गए. तो when there is a combination of the heat, the yellow color comes. जब भी combination of the heat होगा, तो yellow color आ जाएगा. Sometimes we can see even there are the two main pattern, but there might be few more pattern also. Sometimes dry skin, person is having lots of dryness, dry hair, dry skin, and dry flecks are coming out. जैसे कैसे psoriasis में ऐसे dry skin हो जाती है, ऐसे करो तो झड़ता है पूरा. Sometimes it is just because of the dryness.
So you have to think many different ways. Main causes are these. Got it? सर ये डैम्पनेस हीट में ये भी सिम्टम आएंगे ना कि जो इचिंग होती है जिसमें उभरे उभरे से रैशेस हो जाते हैं व्हाइट कलर के, वो भी डैम्पनेस ही होगा ना हीट का? रेड कलर के रैशेज होंगे if damp heat is there. अच्छा, और देखिए जो damp कोल्ड heat है वाला ना, होगा वो उसमें जो जैसे व्हाइट वाले हो जाते हैं येलोइश टाइप के, वैसा हो जाएगा? तो फिर वो हीट नहीं है, फिर वो डैम्पनेस है। डैम्प कोल्डनेस का होगा वो? सिर्फ डैम्पनेस अकेला भी कर सकता है ना? ओके। और सर फ्लेम में भी सेम ट्रीटमेंट जाएगा जो आपने फ्लेम बताया, चेस्ट में हैवीनेस आ रहा है जिसमें? चेस्ट हैवीनेस का तो हमने ट्रीटमेंट बस अभी आपको एक ही पॉइंट बताया, स्टमक फटीग। नहीं, फ्लेम का जैसे आप कहते हैं ना, डैम्पनेस, एक डैम्पनेस होगा और एक फ्लेम होगा जिसमें So I heaviness told the flame is invisible, so how to work on the flame? तो हाँ, फ्लेम के लिए हमारे स्टमक फटीग इज वेरी गुड पॉइंट। ओनली सिंगल पॉइंट? नो, स्टमक फटीग इज ऑल्सो वेरी गुड पॉइंट। जब भी कोई फ्लेम का अटैक होगा, जिस पार्ट में होगा उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन स्टमक फटीग विल बी वन ऑफ द पॉइंट। ओके। और एक उसमें सर एक ये लीवर का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है, जैसे फैटी लीवर हो गया, लिवर सिरोसिस। लिवर की सारी वीडियो देख ली आपने? नहीं सर, मैंने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है। तो फिर कैसे समझ में आएगा आपको लिवर का पैटर्न? ओह, मुझे लीवर की क्लासेस है ना, मैंने लेट ज्वाइन किया था ना अभी थोड़ा टाइम पहले ही। देख लो 6-7 तो वीडियो है बस। ओके ओके, उसमें ठीक। बॉडी जैसे भी स्प्लीन का कैसे धीरे धीरे आराम से बताया, ऐसे उसमें लिवर का भी बहुत धीरे धीरे आराम से बताया है। ठीक है, मैं पहले वाले वीडियोस चेक करती हूँ। जी। ओके, थैंक यू। Sir, I have one small question, sir. Yeah. When we read more or when we see more of videos, I mean, the classes and all, will the spleen becomes weak? So like you're telling, if you are joining the classes and you're seeing the more and more videos, so by watching lots of video, by sitting too much, your spleen is getting weaker or Yes. not? Yes, by studying more books or whatever it is. My spleen is weaker, I know that. See, I will tell you, spleen is having connection with the concentration and the thought. Yeah. Right? If you having excessive study, excessive overthinking, or you are putting lots of prolonged mental effort, your spleen will get deficient. But if you're studying with the enjoyful moment, joyful, suppose we study with a very great stressful condition, then it will make your spleen deficient. Okay. But if you are studying something joyfully, I am Yes. studying joyfully, then spleen will not get deficient. Okay. No, this Okay, TCM is but giving us I will tell you, much even I more. will tell you, we should take some breaks. If we are studying for a longer time, we can make some breaks. Even we tell the students study for 1 hour or 40 minutes, then have the 5-minute break or 10-minute break. Do some stretching, take some hot waters, take some like that. Even prolonged sitting can because when person is sitting now, what is happening? Sitting too much, dampness accumulate. So what you have to do? You have to play something, you do some exercise, you some do yoga. Don't allow to deposit it. There's no issue at all. Okay. I will tell you one thing. Like some person do lots of meditation, and with lots of practice, they are getting enlightenment, and they are getting they are getting feeling on the chakras and all. One of my friend who was living with me, my room partner, he was doing lots of meditation. When he do meditation now, he was not having any experience. But when he was studying now, while studying, he was suddenly going in the very high stage of the meditative state. While studying, if you are involved fully with some subject, and you are flowing with that subject, that subject become like a meditation for you. Now it's not make your spleen deficient. Okay, sir. Now you are going inside the subject. You're dipping inside the ocean. Now, when spleen is making, when you are studying because you have to pass the exam, so you have to study, it's that time it is making. So when you are studying TCM now, just study joyfully. Then there's no Yeah, any. sir. Yeah?
It's giving something relaxation, and we are knowing most of the things. And some of my friends, they think that whenever they study some topic, maybe that may be with me, that disease is with me, and they'll start putting the points. I tell them, no, don't do that. Everything will not be there. But even then, Why you are telling not to put? You let them put. Why are you telling not to put? sir, it's becoming them weak, sir. Without guidelines or without knowing the No, diagnosis, without they knowing should not put definitely. all the points, no, sir. Yeah, so instead of that, you can tell, okay, stand up, do the stretching. Ah, You tell the students, you are having full freedom whenever you like. You can get up, you can dance, you can rotate, you can yes. stretch. Don't move. Just stick with your place. Don't look here and there. No, sir, not like that. Instead of putting all the points needles, it's better to put one methi dana or something like that. Every point, whatever they know, they start putting the needles itself. That will give side effects, no? No, maybe they want to learn, so they are putting. So Experimenting, maybe. let Yeah. them experiment. Okay, sir. Hard to prevent, yeah. Okay, sir. But Thank you. because they Nice are doing, class. but they are doing some experiment. But make sure they are doing under observation. So you tell them, okay, this is right, this is wrong. Do this, don't do that. Yeah. So they are under observation. So why to worry? You are there Yeah. for to That's take it. care. Yeah. Thank you. Good night. Nice class. Sir, one Spleen was question. a very Ah, interesting topic. Sir, there is one question, sir. Namaste, sir. हाँ. Sir, liver की stagnation always creates heat. लीवर की स्टैग्नेशन की टंग सर पर्पलिश कलर की भी रहती है ना? पर्पलिश कलर की टंग होती है लिवर ब्लड स्टेसिस में. When the Okay. liver chi stagnation is there, it create heat and red tongue. But The when liver. but when it become when so liver chi stagnation and liver blood stasis. What are the tongue color? You're asking for tongue now. Yes, yes, sir. So liver chi stagnation creating heat. So and liver blood stasis is having connection with the. So when we are seeing the tongue, the side of the tongue, it is red. If the patient is having liver chi stagnation, but once it become dark red or the purple or the bluish purple, it is liver blood stasis. Or we can see That the is very this sir. sublingual vein below the tongue become purplish. That is the liver blood stasis. So liver chi stagnation means red. Liver blood stasis means dark red or purple or bluish purple. Okay. Got it? Okay, sir. सर Hmm. सर हाँ मैं बोलिए. बोलूँ सर हाँ जी बोलिए. एक बार एक टंग देखा था तो जो लिवर एंड गॉलब्लैडर वाला साइड था वो इट वाज ओके लेकिन जो स्प्लीन का साइड था ना इट वाज वेरी वेरी डार्क मतलब नॉर्मल टंग के कलर से बहुत डार्क था लाइक एकदम अलग ही लग रहा था एज इफ स्टेग्नेशन है कि क्या है मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था एकदम ब्लैकिश ब्लू बोलेंगे वैसे था वो तो वो वैसे क्यों था आई मीन स्प्लीन वाले पोजीशन में ब्लैकिश ब्लू मतलब वैसे था ग्रेज ब्लैक समथिंग लाइक दैट Okay, so let me revise the question. Suppose we can see the tongue. On the side of the tongue, this is the liver area and the gallbladder area, especially left side, we can see liver. On the right side, we can see gallbladder, and this side is liver and gallbladder. But if we see the tongue, we can divide the tongue in three parts. This is the front one third or upper one third, middle one third, and the lower one third. This area is the spleen area on the side, on the middle part. So you are asking if the side area having which color? दिस इज ये तो मेरे को लिवर एंड गॉल ब्लैडर का साइड लग रहा है No, मतलब this is spleen. This is spleen. ये स्प्लीन साइड है Yes.
Okay, matlab it is towards side only. Stomach in I the thought, center. Stomach in the I center, thought spleen it in the is side. okay. तो जो टंग का साइड है वो लिवर एंड गॉल ब्लैडर वाला साइड के बगल में होगा ना स्प्लीन का? बताया ना, ये स्प्लीन है, इस स्प्लीन साइड ये दिखा। तो ये फिर अगर ये स्प्लीन है तो लिवर का और गॉल ब्लैडर का कौन सा होगा? लिवर का पूरी लाइन में है। अच्छा, So I will tell you ओके here. So spleen is this much, ओके, अच्छा। but liver is this much. Liver and gallbladder this much. ओ, एक्चुअल में वो जो था वो स्टमक के लाइक जो सेंटर में स्टमक है, स्टमक के साइड में दोनों साइड मतलब स्टमक वाला सेंटर एरिया वो ओके, बट उस हाँ, तो स्टमक, ये सेंटर में स्टमक है ना, इसके बगल हाँ में तो स्प्लीन है, ये पूरा स्प्लीन है। स्प्लीन हाँ, हियर तो एंड स्प्लीन। ये पोर्शन जो था दोनों साइड का, ये ब्लैकिश ब्लू ग्रेश ब्लैकिश समथिंग था। So what is the meaning तो of black is and gray is कोल्डनेस तो spleen नहीं area लग रहा था on the हाँ। tongue? हाँ? Blood stasis. Stagnation मतलब स्टेग्नेशन तो जैसे बोल सकते हैं, कोल्डनेस भी बोल सकते हैं किसी किसी के एज पर द सिम्टम्स, पर उनका कोल्डनेस तो नहीं लग रहा था नहीं, देखो, एज अगर पर। क्या होता है ना कि अगर किसी का बहुत ज्यादा ब्लैक होगा, द पर्सन इज हैविंग टू मच ब्लैक एंड coating or the gray coating, it might be excessive heat, because consumption of the body fluid and the yin, severe internal heat, or the yin deficient, the empty heat because of the yin deficiency, or maybe after high fever, or maybe after constipation, because of some reason, what is happening? There too much heat. Okay, this is the ओके condition number one. This is the condition number one. तो क्या होता है ना कि ब्लैक और ग्रे, सो इन दिस वे, कि ये, तो पहले तो हमने देखा कि अगर उस व्यक्ति को ये इस तरह की टंग है, लाइक यू आर टेलिंग द टंग इज हैविंग ब्लैक और ग्रे ड्राई नॉट कोटिंग। फुल्ली टंग, ओनली दोस टू पार्ट, वो साइड स्टमक के साइड वाला जो दो पार्ट है वो दोज वेयर मतलब ऑफ डिफरेंट कलर, और पूरा टंग वाज ओके। तो वो मतलब मेरा जो You have to see, I will tell you one thing. I don't know what, but I will tell you, black gray dry coating, that is because of the extreme heat and reduction of the fluid. Got it? हम्म हमें देखना है कि now we are seeing the tongue is black or gray. So tongue is black or gray. So this is because of the extreme heat. It might be because of the extreme heat. Number two, हम्म tongue is black and gray. It might be because of the extreme coldness. Now the question comes, how to find out? What is the condition? कैसे पता करें कि ब्लैक एंड ग्रे टंग है? ये एक्सट्रीम हीट भी हो सकती है, एक्सट्रीम कोल्ड भी हो सकता है। तो हाउ टू फाइंड आउट? सो इफ द एक्सट्रीम हीट, it will be dry. If the extreme cold, it will be wet, गीली। समझ गए? अगर जी ब्लैक और ग्रे से, तो वो हीट हो सकती है या फिर कोल्ड में कोल्ड हो सकती है। अगर हीट होगी तो पानी सूख जाएगा, ड्राई, ब्लैक एंड ड्राई। तो टंग इज ब्लैक एंड ड्राई। वो उसी पर्टिकुलर एरिया में थी तो हाँ, तो मतलब वो उसको बोल रहा हूँ ना कि हीट, आपको वही तो मैं बता रहा हूँ कि देखो ना कि अगर आपकी जिस एरिया में भी थी उस एरिया में ही वो चीज है ना, तो द टंग इज ब्लैक एंड ड्राई, दैट इज हीट, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम हीट देयर इज अ डिप्लीशन ऑफ द फ्लूइड। और अगर उसकी टंग ब्लैक एंड वेट है, तो एक्सट्रीम कोल्डनेस है उस चीज में, हो सकता है थैंक ना। यू सर। ओके, सर अगर स्प्लीन यंग डेफिशिएंसी का पॉइंट देंगे तो वेट लूज होगा? नॉट श्योर अगर वो स्प्लीन, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था, किसी ने प्रश्न पूछा था कि वेट लॉस का क्या ट्रीटमेंट होता है। वेट लॉस का जो ट्रीटमेंट होगा वो, अगर स्प्लीन यांग से वेट बढ़ा होगा तो उससे रिजल्ट मिलेगा ना। इफ द पर्सन इज हैविंग वेट गेन बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, then you have to treat that reason. For the गॉट weight management, you have to work on the pattern, on the cause. All the weight you can't reduce with the spleen pattern, but if there is a
involvement of the spleen pattern, if there is a spleen yang deficiency or some spleen pattern, then you will get result with the spleen points. Thank you, sir. Welcome. Good Jasminder ji. evening, sir. Can I just ask a question Sir. regarding the tongue that you just now drew? हाँ मैं भी एक क्वेश्चन पूछना है हाँ, एक बार So- जिसने पूछा वापस नहीं पूछना. हाँ, You know, the tongue that you just now drew, you said that in the front portion of the tongue, that's the area where there's liver, and then liver and gallbladder extends to the middle area as well. But whereas the spleen Silmia ji, area... your internet connection is poor. Oh, sorry. So should the other person continue with the question then? No, you now now we can hear you. You Okay. continue. Okay, so I was saying the tongue that you just now drew, the front area and then the middle area. So you said the liver and the gallbladder area extends from the middle to the front of the tongue as well. And the spleen area is only in the middle portion. But I have seen tongues where the teeth marks is on the front anterior bit of the side of the tongue. Teeth mark anywhere in the tongue, that is spleen deficiency. Oh, so anywhere it's still spleen deficiency. Yeah. Okay. Why the teeth mark? Teeth mark means tongue is soaked in the water, like a sponge is soaked in the water. Mm-hmm. If the sponge is soaked in the water, means that sponge is having water. Okay. If the body is having water retention, if the spleen is deficient, if body is having dampness, spleen deficient, teeth mark might be anywhere in the tongue. So anywhere it's okay. And then the purple color, I have seen where you have marked it as spleen on the middle part of the tongue. On the right side, I have seen people have a purplish color. Sometimes it's on the left. So it's still considered as liver cheese stagnant. I mean, blood stasis then, if it's purplish over there. Yeah, it is purple, then blood stasis. Okay. I just wanted to ask that. Okay. Thank you. Okay. सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना है सर सर लिवर स्प्लीन के साथ एक्सेस पैटर्न में लंग भी इन्वेड मतलब हो सकता है सर किसके साथ? स्प्लीन के साथ? लिवर इन्वेडिंग ऑन स्प्लीन का पैटर्न बताया आपने अभी उसके साथ आपका लंग कहना भी ये है, या लिवर इन्वेड भी स्प्लीन, लिवर माइट इन्वेड 2-3 प्लेस टुगेदर. ओके सो फिर उसका भी पॉइंट्स हमको ऐड करना है ऐड करना है सर ओके सर मुझे ऐसा है कुछ पैटर्न से वो मिक्स दिख रहे हैं मिक्स इन द सेंस अगर हीट स्टूल में फाउल स्मेल है लेकिन बर्निंग सेंसेशन नहीं है एनएस में और स्वेलिंग है थर्स्ट है स्वेलिंग है बॉडी में और लिवर चीज स्टैग्नेशन का भी है टीथ मार्क्स भी दिख रही है एडिमा है मतलब 2-3 बहुत कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं सर उसमें तो सही ऐसे ही मिलेगा ना, स्प्लीन चीज डेफिशिएंट, लिवर चीज स्टैग्नेंट. हाँ It might common if the liver chi is stagnant, if the liver chi is very high, and definitely it might affect the spleen, because liver is over controlling the spleen and spleen will get deficient, person will get teeth marks. तो लिवर चीज स्टैग्नेशन का पॉइंट्स में लगाने से बहुत इचिंग हो जाता है सर डीप इचिंग बहुत तुरंत और यांग It पॉइंट्स means you are not लगाऊंगी able to work. If you are not able to, if your itchiness is coming because of dampness also, so you have to clear the dampness. Yes. In 369 sedation. मीन्स डैम्पनेस भी है सर वो क्लियरली है जो भी मैं खाती हूँ फूड वो तुरंत डैम्पनेस मतलब फ्लेम में कफ में तो वही कन्वर्ट हो जाता स्प्लीन है 369 को सेडेट करना होगा आपको, स्प्लीन अच्छा 369 को सेडेट करना होगा, और साथ हाँ में लिवर ची स्टेग्नेशन को, जैसे अभी हम लास्ट में जो प्रोटोकॉल समझा था ना हमने, हाँ हाँ वही लिवर वही है सर you हाँ have to see what is the first spleen is getting deficient, so there is a Yes. formation of the dam. हम्म Second, dampness is obstructing the middle warmer. हम्म So what is happening? Liver chi is not flowing. हम्म So we have to apply that protocol. Because see, you have to work on the liver chi stagnation, like liver 13, liver 14, gallbladder 24, gallbladder 24 34. These all points you have to sedate. On the other side, you have to work on the dampness, spleen 3, 6, 9, sedate. So you are working on the liver chi stagnation, you are working on the dampness, you are sedating them. And other side, you are also improving spleen.
ओके, CV12 एंड UB20 को स्प्लीन इम्प्रूव को भी करना है. इम्प्रूव कर रहे हैं. So on the one side you are Okay. reducing dampness, you are reducing heat, liver chi stagnation. On the other side you are improving spleen. Then Okay. you have to Okay. make this. सर अभी लंग का भी पॉइंट्स, क्योंकि स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग भी आ रहे हैं सर, वो मींस समझ में नहीं आ रही बिकॉज ऑफ मेनोपॉज या बिकॉज ऑफ लंग ची डेफिशिएंसी, मतलब कैसे Sweating डिफरेंशिएट might be कर. પોતાના પ્રશ્ન પૂછો છો કે કેટલા વાગે તો કોઈ દેખા नहीं. the reason of the sweating a lot. Sweating के ऊपर एक पूरा क्लास लेना पड़ेगा, right? Sweating एक ऐसा चैप्टर है. Because sweating is a very big thing. Like sweating is a very big chapter as per TCM. There might be many different types of sweating, and there are many different patterns like night sweating, day sweating, spontaneous sweating, profuse sweating, right? Sweating के कई सारे कारण हो सकते हैं. Got it? Suppose someone is having spontaneous sweating daytime without exertion. कोई बैठा है और पसीना निकल रहा है without doing any exertion. That is lung chi deficiency. Okay. Or might be heart chi deficiency. Okay, but if the heart chi deficiency, then there should be some sign of the heart like palpitation or something like that. Otherwise, if the person is doing no any exertion, just sitting and sweating, that is a lung chi deficiency. The night sweating is yin deficiency that we know. Night sweating is the yin deficiency. Okay, it might be yin. Now then we have to find out kidney yin, heart yin, which yin. But the night sweating is the yin deficiency. Now sweating like river is flowing, पानी की नदियां बह रही हैं. Sweating like profuse sweating, that is collapse of yang. Collapse of yang. And even sometimes collapse of yin, but most of the time collapse of yang. जैसे किसी को जब हार्ट अटैक आता है ना, जब किसी को कार्डियक अरेस्ट, आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट, if you think sometimes person sweat a lot, too much sweating and getting collapse. तो देखो कई कारण हो सकते हैं. स्पॉन्टेनियस स्वेटिंग, बिना एक्सर्शन के पसीना आ रहा है, लंग डेफिशिएंसी. रात को आ रहा है यिन डेफिशिएंसी. पानी की नदियां बह रही हैं, यांग डेफिशिएंसी. इसके अलावा भी बहुत होते हैं. इसके अलावा भी कई सारे, मतलब ये मैंने आपको कुछ बताया ना. स्वेटिंग ओनली ऑन द हेड. जैसे हमारे मामा जी हैं, खाना खाते हैं, वो खाना खाते समय सिर्फ उनके माथे पे पसीना आता है और नाक पे, और कहीं नहीं आता. The person is getting sweating only on the head or nose. That is stomach heat. What is that? That is called stomach heat. When the stomach heat is there, person having sweat only on the head region. Now, few person having sweating only in the palm and feet. कुछ लोगों को सिर्फ palm और feet में sweating होती है. These people are many youngsters or teenagers, emotionally imbalanced. So there is involvement of the heart. They might be having heart fire or heart insufficiency. They are having some pattern of the heart. It might be heart fire, it might be heart insufficiency. So you have to treat the heart. But when I'm telling heart, don't declare that you are having heart problem. That is our pattern. अगर किसी को हथेली में और पैर के तलवे में पसीना आता है, कई लोगों को आता है, when they are in the anxiety, they are getting sweating. So it is because of anxiety, because of emotional imbalances होता है. इसके अलावा और भी स्वेटिंग के पैटर्न हैं, है ना. जैसे खाना खाते खाते, वो तो बता दिया मैंने आपको. और भी पैटर्न होते हैं. तो मेन पैटर्न आर लाइक दैट. डे स्वेटिंग, लंग्स, समझ में क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. देखो हाथ, अब तो पूछो तुरंत. हाथ उठा के वेट मत करो, क्योंकि रात को 11 बज चुके हैं. जल्दी जल्दी पूछिए. सर जो टंग में एक फूलापन होता है और एक फैला हुआ होता है, एक ऊपर की तरफ फूलती है, एक फैलती है, उसमें क्या डिफरेंशिएट होगा? तो टंग डायग्नोसिस क्लास चल रही है क्या? सर अभी समझने के लिए पूछ रही हूँ. एक ही मिनट.
हाँ, क्या वो क्वेश्चन है आपका? टंग क्या हो गई है? टंग एक फैल जाती है, वो हीट से होती है क्या? और जो ऊपर की तरफ फूलती है वो यांग डेफिशिएंसी से होगी क्या? स्वॉलन जो हो जाएगा। यू आर आस्किंग व्हाट इज स्वॉलन टंग हाँ एज पर TCM? जी। और swollen on the side और swollen हेलो or सर, entire हेलो tongue is सर। swollen? अभी रुक जाओ, हेलो, एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन चल रहा है। तो क्या है ना, swollen tongue क्या है? देखो, spleen is deficient. जी If the spleen is deficient, there is a formation of the dampness and जी swollen tongue. It might be spleen Qi deficiency, it might be spleen yang deficiency, it might be any other type of the yang deficiency. If the tongue is swollen, अगर टंग स्पंज की तरह फूली हुई है, इसका मतलब है शरीर में फ्लेम बन रहा है, क्योंकि टंग में फ्लेम दिख रहा है, यानी शरीर में फ्लेम है। टंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, whatever in the body that is same in the tongue. If there is a dampness in the body, the dampness in the tongue, the flame on the tongue, so tongue will be swollen. So swollen tongue might be spleen Qi deficiency, spleen yang deficiency, kidney yang deficiency. Got it? Now, most commonly pattern, swollen tongue with teeth marks. स्वॉलन टंग है, अब खुद सोचो कि फूली हुई जीभ को दबाओगे तो दांतों के निशान तो बनेंगे, दैट इज स्प्लीन डेफिशिएंट, दैट इज स्प्लीन पैटर्न। इफ द स्वॉलन टंग विद द टीथ मार्क्स, दैट इज स्प्लीन पैटर्न, स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, स्प्लीन पैटर्न। और जो बट फैल समटाइम वी सी, अभी क्वेश्चन आपका पूरा खत्म नहीं किया हमने, ओके सर। बट समटाइम वी कैन सी स्वॉलन टंग बट आल्सो रेड, दैट इज वेरी डेंजरस कंडीशन, कि पानी भी है और हीट भी है, डैम्पनेस भी है, हीट भी है, दैट इज वेरी वेरी एक्सेसिव हीट, swollen in the red tongue. अब पर्पल इन द swollen tongue, दैट इज ब्लड स्टेसिस। अब बाकी भी गणित लगाते जाओ आप, है ना? तो आपका प्रश्न यही था कि और कुछ था? सर मैं सिर्फ शेप नहीं समझ पा रही हूँ कि जो जीभ ऊपर की तरफ फूल है, मोटी ऐसे होती है कि ऊंचाई में गई, और एक जीभ गई हॉरिजेंटली, अब वो जो ऊपर ऊंचाई में जाती है वो swollen ही होती है, और जो हॉरिजेंटली जाएगी वो हीट से होगा। जो हॉरिजॉन्टल नहीं, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। swollen ऐसे हो या swollen ऐसे हो, swollen मीन्स स्प्लीन डेफिशिएंसी और स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, किडनी यांग डेफिशिएंसी। अब वो पतली, उसमें फ्लेम नहीं है, वो मोटी नहीं है, वो साइड में से मोटी है, ऊपर से मोटी है, कहीं से भी मोटी है, मोटी तो मोटी होती है। ऐसा मतलब नहीं वो कि ऊपर से ही मोटी होगी तो swollen टंग बोलेंगे, समटाइम इट माइट बी swollen the side also. I have seen patient are coming swollen tongue only on the one side, swollen tongue only on one side, swollen tongue only both the side, swollen entire tongue, swollen tongue on the middle, swollen tip of the tongue, swollen middle of the tongue, swollen back of the tongue. So wherever the swollen, that part is having flame dampness. Clear? यानी जहां भी swollen है तो swollen है मतलब dampness है, flame है। हाँ बोलिए मुझे बोलिए लग रहा है बोलिए। ये बोल रही है कि जब जो टंग होती है ना, वो कई बार जब पूरे मुंह को कवर करके बाहर निकलती है, मतलब वो फैली हुई रहती है। और एक टंग होती है जो खाली ऊपर के साइड में स्वेलिंग करती है, वो और वो जो फैली हुई टंग होती है, वो जब कोई मुंह खोलता है तो ऐसे लगता है कि पूरा मुंह टंग से भरा हुआ है, इफ आई एम ऐसा नॉट बोल रहे रॉन्ग। जी ऐसा जी बोल जी रहे हैं आप? यस। तो आप बोलिए, अच्छा आपका कहना है कि फैली हुई और उभरी, यानी ऐसी टंग, जब मुंह टंग बाहर निकले तो लगा है कि, जी है ना, जैसे कोई चूहा गुफा से निकल गया ना, सर, मोटा। ओके, so you're asking the tongue when person is opening the mouth, swollen, and a big swollen tongue is coming out, है ना, which is all around the, like enveloped from the mouth. ऐसा क्वेश्चन है क्या आपका? जी खतरनाक क्वेश्चन पूछते हैं भैया।
ऐसे क्वेश्चन आपने पेशेंट देखा होगा तभी ऐसा क्वेश्चन, पेशेंट देखा था क्या आपने ऐसा? जी जी जी, मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है उस समय कि भी ये जो इतना फैली हुई टंग निकल रही है, तो इसे हम स्वॉलन में माने या इसको हम हीट की वजह से माने, या जो ऊपर की तरफ उभर रही है उसको क्या माने? वही है, सेम दैट इज, हम बोलेंगे कि नाउ वी हैव टू सी 4 कंडीशन. Swollen tongue, swollen tongue, swollen tongue, swollen tongue. We have 4 tongues swollen. First tongue having pale color. Pale means no redness. Second tongue is red. Third tongue is purple. Okay, the tongue who is looking pale without blood and swollen. Spleen deficiency, spleen yang deficiency. Some yang deficiency, because yang also giving red color. Remember one thing, yang also giving red color. Some yang. But swollen tongue, whether the coming big tongue from the mouth, if it is red, then swollen means dampness, red means damp heat. The swollen tongue with the purple color, so edema in the body and there is blood stasis. Same thing, same condition, same thing. तो हमें ये देखना है कि चीज भैया उससे कुछ नहीं बदलेगा, चाहे वो बीच में से मोटी है, पूरी मोटी है, वो स्प्लीन ची डेफिशिएंसी, स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी, किडनी यांग डेफिशिएंसी, यही सब डायग्नोसिस की. गॉट इट? ओके सर, थैंक यू. ओके, वेलकम. सर टंग का बारे में थोड़ा क्लासेस लीजिए ना, वो भी ओके थोड़ा क्लास, कंफ्यूजन होता है टंग डायग्नोसिस बहुत इज ओवर नाउ. सर अभी क्या है ना, पैटर्न डायग्नोसिस की क्लास छोड़ नहीं सकते ना, हाँ सर, बाद में रिक्वेस्ट है सर. बाद में देखेंगे. बाद में क्या, तो क्या होता है कि हमने तो सोचा था कि आपकी 3 3 क्लास ली है हमने. एक एनाटॉमी की चालू की थी, एक हमने पैटर्न की चालू की थी, एक हमने पीजी डिप्लोमा की चालू की थी. दिन में 6 6 मैसेज आते थे, सर वी आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, वी आर नॉट एबल टू मैनेज टाइम, वी आर फीलिंग टू मच डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड. ऐसे मुझे ऐसे इतने मैसेज आए, मैंने भैया अब आराम से एक ही क्लास, एक ही क्लास. तो इतने सारे लोग हैं, 100 150 लोग हैं, अगर 4 6 लोग बार बार मैसेज करते हैं तो उससे फर्क पड़ता है ना हमको. हम हाँ नहीं कर सर. पा रहे, हम पुराने वीडियो भी नहीं देख पा रहे, क्लास भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, रिवाइज भी नहीं कर पा रहे. क्यों नेहा जी, क्यों हंस रही है इतना? नेहा जी बहुत हंस रही हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं इसमें जो ऐसा करते थे. अब सर मैं उनकी नमस्ते. बात, हाँ नमस्ते. सर हमको इसके साथ फूड के बारे में भी कोई क्लास आपका वीडियोस है क्या सर? किस पैटर्न के लिए, किसी फूड के लिए? देखो कुछ चीजें आपको खुद स्टडी करना पड़ेंगी. उसका कारण ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज एक बार स्टार्ट करते हैं ना तो 1 या 2 दिन में खत्म नहीं होती वो. इट टेक लॉन्ग टाइम, है ना. तो हाँ एक दो सर. दिन के 1 2 दिन में कभी खत्म नहीं होती वो क्लास. तो अभी क्या है ना कि अपना टीसीएम इतना बड़ा है ना, पहले इसको कंप्लीट किया जाए. अभी हमें मेरिडियन कंप्लीट करना है, जो हम आपको कल मैंने मेरिडियन के 2 3 वीडियो डाले. कौन सा मेरिडियन डाला? पेरिकार्डियम, लंग यानी कार्डियम लंग अपर. आणि हार्ट. पेरिकार्डियम था कल. पेरिकार्डियम लंग कौन सा आणि डाला? हार्ट. पेरिकार्डियम. हाँ तो क्या आप लोग देख रहे हैं सारे वीडियोस? सर, हाँ आज सर. तो हाँ सर, हार्ट देख का सकते हैं. किया. हाँ सर. जब हम वो पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे मेरिडियन पढ़ाओ, जब मेरिडियन दे रहे हैं तो बोलोगे डाइट पढ़ाओ, जब डाइट पढ़ाएंगे नहीं सर. सर पैटर्न समझाओ. पहले जो पढ़ा रहे हैं ना उसको 3 3 4 4 बार देखो, है ना. 3 3 4 4 बार देखो, जो पढ़ो ढंग से. और यस पढ़ाई सर. कभी खत्म नहीं होती. आपकी बात सच है, कहते हैं सच में, ये जो ये ना कभी खत्म नहीं होती है. कीप स्टडिंग, कीप स्टडिंग जॉयफुली, हाँ विदाउट स्ट्रेस, है ना. सर, एक आदमी को कितना खाना खाया तो भी वो फुल नहीं फील होता, वो कोई सिम्टम नहीं आ रहा है, ज्यादा भूख भी नहीं लग रहा है, लेकिन खाना इनटेक बहुत ज्यादा हो रहा है. वो क्यों सर?
द पर्सन इज हैविंग टू मच, वो हम स्टमक में आ जाएगा पैटर्न। उसके लिए इसके कल से हमारा स्टमक चालू होगा। तो आपने जो वो बात की है एक्सेसिव हंगर और वो सब, वो हमारा उसमें आ जाएगा स्टमक पैटर्न। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। ओके। किसी ने तो हाथ उठाया था बीच में, और किसी ने, कहाँ गए वो? एक मिनट ढूंढते हैं उनको, क्या नाम है? परमजीत कौर जी का हो गया क्वेश्चन, जोगिंदर जी, सबके हो गए, चलो ठीक है, ओके फाइन। तो चलिए आज की क्लास को विराम देते हैं। अब हम मिलेंगे कल विल स्टार्ट टुमारो स्टमक पैटर्न, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्प्लीन इन द स्टमक then there is a presentation that everyone has to present the spleen and stomach. ओके, आप सभी लोगों को स्प्लीन और स्टमक के की प्रेजेंट करना होंगे। उसके लिए आपको 2-3 दिन का समय दिया जाएगा तैयारी करने के लिए। इन द प्रेजेंटेशन यू कैन चूज एनी 1 or 2 पैटर्न, and remember one thing, presentation time per participant maximum will be 10 minutes. If anyone is exceeding more than 10 minutes, then there will be negative marking. एक पार्टिसिपेंट को मैक्सिमम 10 मिनट का समय मिलेगा। अगर आपने 10 से 12 मिनट कर दिया तो देयर इज अ फाउल। गॉट इट? सर ये क्या है प्रेजेंटेशन, मुझे तो नहीं पता। अब बता रहा हूँ, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप बोलेंगे कि टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी। So in the spleen yang deficiency, person is having no appetite, this and that, and body diarrhea, and this and that. Their symptom. तो हमने जो पढ़ाया, and this is the points. We can treat the person. Okay. ऐसे आपको you have to choose any one pattern and you have to present. Okay. मतलब जो क्लास चल रही होगी उसमें हमें उसी में से पैटर्न पे बताना होगा, खुद ही एक पैटर्न आपको बताना, बताना। यस, पूरा कंप्लीट उस पे पैटर्न पे बताते जाएंगे। कंप्लीट देके बताना है, एंड आप अपने नोट्स नीचे रख सकते हैं। और थोड़ा रेफरेंस के लिए पढ़ना नहीं है, लेकिन एज ए रेफरेंस, एज ए टाइटल्स यू कैन सी द नोट्स। ऐसे पढ़ना नहीं है लाइन से। ओके, एंड यू कैन प्रेजेंट इट। गॉट इट? ओके, okay, fine. So done for today. Now we'll see you tomorrow. Good night. Closing the session. Thank you. Good night. Thank you, sir. Good night.